Hello, folks. This is once again a new episode on our discussion for today. VVU Radio is very proud to bring lots of discussions. We are never scared of discussing some tough topics. And as you all know, that one of the pillars of VVU Radio and TV is mental health. And today, once again, we've got wonderful folks. We are going to discuss once again topic mental health. I have been joined by some very experienced and educated in that field of mental health individuals, plus some jockeys as well, who are specializing in this field, who bring different programs. My name is Anu. I'm the CEO and founder of V4U Radio and TV. I have dialed in from a city called Edmonton, Alberta, Canada. I've been joined with my co-host, Monica Avasti. She is a radio host. She brings such wonderful shows, and of course, I'll tell you more about why today she brings this show. I've been honored here to be joined by another co-host, my founding partner, plus the COO of V4U Radio TV, Dr. Vandana Srivastav, and of course, two special guests with me, Abhilasha here, who is a behavioral therapist, holistic science specialist. Lots can be said. I will stick to just say she's a great personality. She can add a lot of value. And of course, a person you cannot see on the screen having some technical issues, Dr. Ashok, he's dialed in from Chandigarh, I guess, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, but he is a general practitioner in medicine, of course, with special interest in psychiatry. So here we are to discuss once again some key issues on mental health. Mental health has no boundary, no race, no color, no creed, and that is why it becomes such a heartfelt topic to be discussed, especially after COVID, folks, that this topic is no longer a taboo. So hopefully today's discussion may bring some good points. Once again, this is our attempt. Why this topic today? Monica brings such a great show, which is called a weekly show called Unkahi Unsuni. It's a song-based show. She shares some stories, and fortunately or unfortunately, she touched on the life of a very good actress of yesteryears, Parveen Babi. And Parveen Babi's, as much as, yes, it's an unfortunate case, but I think it is a good case study for those studying mental health, how the bell curve went so sharply up, came down, and midway, unfortunately, the life was lost. So, of course, what can we learn from that? I think that was the reason when she was doing a show on Parveen Babi, this came to her mind, and she kind of gathered the panel together today. This is the whole why we are here. This is the reason. I would just do some disclaimers. We will be respectful. However, the conversation can be tough. We will try to really maintain privacy. And of course, there is no intention to hurt anyone. So listeners who are listening, this is purely a discussion from our minds, topics. We are not bringing any, hinting to any individual or trying to really impersonate any individual's life. However, the conversation sometimes gets a little bit tougher than we wish to. However, passing on the flame to our host, Monica Avasti, who brings the show. Monica, all yours, and then pull me in as you feel fit, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Anupam, and hello to Abhilasha and Ashok and Vandana. As he said that I got Parveen Babi on board because April, I normally try to talk about an actress who's born in that particular month, but the moment I had Parveen Babi, I thought of it. I knew that I had to bring the case, the problems in between, and she was such a good person. So this also lies behind, because what happened was during that time, the moment उसका mental illness का बाहर आया, उसके बारे में कुछ चीजें ये बाहर आई, because to just sensationalize सब कुछ, उसकी qualities, उसकी अच्छाइयाँ सब कहीं पीछे चले गए. And this is what I wanted to highlight, that there are so many good things in a person. हमारा जो stigma है, जो relating to mental illness, वो चीज बहुत ज़्यादा लोग उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ पाते हैं. In this discussion, this is more like a discussion, and of course, our honorable guests, they know much more than us as laymen, as we are the layman. They know a lot of things. So we will try and constrain this discussion under the few perspectives. That is the role of genes in mental health, regarding the gender,
nature of job, the people who keep they are in different kind of jobs, what kind of stress क्या होता है, किस job से कितनी problems होती है, किस में ज़्यादा stress होता है, ये चीजें along with that क्या एज भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसमें एज की वजह से भी क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स या क्या ये प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं. Also the geographical locations and of course the past, present and future, which I've already told you, I have already given these things that we will fall under these perspectives. ये जरूरी नहीं है कि हम ये सारे उनको हम कवर कर पाए, क्योंकि our aim is not कि हम इन सबको कवर करें, हम इन सब के बारे में बात करें. It is just that people who are listening to us, they should know and they should understand what it is about. So my first question rather I just wanted to ask you, हम अक्सर ये बात करते हैं mental illness, mental health और mental disorders, क्या ये चीजें अलग हैं? हम इन सबको अक्सर एक में उसको कर देते हैं और शायद हम उसमें अच्छे से हमें समझ नहीं, चीजें लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं है what exactly it is. So can you just differentiate and tell us कि what it is, what is mental health, what is, और ये कौन-कौन सी कैटेगरीज में सेग्रीगेट होते हैं, अशोक? Well, you see, as I told you, I deal with patients, right? Yes. Someone comes to me with an abnormal behavior, with an erratic behavior. I go into the thought process of the patient, and I have to decide whether it's a neurotic disorder, whether it's a psychotic disorder. So it's limited, and then I treat accordingly those patients. Now, as far as suicide part is concerned, I have come across some patients who eventually committed suicide because of the depression. So we have to go into the causes of suicides, the causes of mental health, which are economic, you see the social. Okay. Right? Abhilasha, what do you think about, do you think that these things are different, like illness, mental illness, हम किसी एक particular problems को हम उनको categorize करते हैं illness में, mental health में? Borika say what Dr. Ashok is saying is correct. So basically, if we just take these two terms, mental health and mental illness. So क्योंकि ये mental word आ रहा है और ये हमारे लिए new concept है, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हम confuse हो जाते हैं. But just replace mental and put physical health and physical illness. We know everything about it. We know the difference, right? हमें पता है कि physical health क्या है. अच्छा, हमारी physical health deteriorate हो रही है, लेकिन हमें अभी तक physical illness नहीं है. Physical health अच्छी नहीं है, लेकिन कोई specific बीमारी भी नहीं है जिसकी वजह से medicines ली जाएं या डॉक्टर के पास लिया जाए. या physical illness, physical health इतनी deteriorate हो गई है कि पता ही नहीं चला कि वो कब physical illness में बदल गई, क्योंकि सही वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं गए या उससे मैनेज नहीं किया, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए. सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट लाइक फिजिकली. इसमें अब आप मेंटल वर्ड डाल दीजिए, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस. सो ऑल द कंफ्यूजन इज रिमूव्ड कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज मेंटल इलनेस. इट्स द सेम थिंग. मेंटल हेल्थ इज नॉट अ बैड वर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ टुडे. इट इज नॉट दैट मेंटल हेल्थ इज अ सिंड्रोम. Mental health is not a syndrome. Mental health is a concept. It's in fact, it's a state of well-being, psychological and emotional well-being. जब वो well-being नहीं रहती है, तो mental health deteriorate करने लगती है. And it may deteriorate, it may not be optimum. And there are people who live their lives with average mental health, with below average mental health, or maybe it deteriorates so much that it turns into a mental illness. And that is when, Dr. Ashok, the doctors, the general practitioners, they step in and they just have to hold the situation there itself and start treating the person by diagnosing कि वो neurosis है, psychosis है, what is the concern, medication क्या देंगे. So in broad terms, to simplify it, I just mentioned it like that, कि physical health, physical illness, mental health, mental illness. That is a clear difference. Okay. And Dr. Ashok, how do you make out that this, like you said, I just see whether it is neurosis or it is some serious. So how do you make out, how do you get to know that this problem is a normal thing or it is really serious and it needs immediate intervention? You see, as a doctor, when somebody comes to you,
with a patient to you, you have to see the thought process. How he's thinking. We have to talk to the patient. We have to make him talk or make it, and then see what the thought and where does it fit in. It fits in psychosis. It fits in anxiety. So that is how the very important thing in treating a psychiatric patient is to make a patient talk and then decide what the disease is. Okay. For example, if if we have some person has a problem, he just feel like crying, and he feel all the time lonely, and he even with the people, and he just feel that he don't want to do work. So does this even this kind of thing, you think that it comes under something? That kind of sign of depression. A patient of depression who is not psychotic opens up after few meetings. Then you see if you ask a question, are you happy at home? Is your husband good? Is he treating you well? There's a defense mechanism which comes. The answer is yes, everything is good at home. But then we can analyze the personality, the thought process, and we can make out that the person is suffering from depression. And even many cases of depression, they present as their somatic complaints. आपके पेट में दर्द हो रहा है. You know, the cause is anxiety and depression. आपके सर में दर्द रहता है. The cause is anxiety and depression. So many patients present physically, they are not all right, but they are cases of depression. This is very good information, sir. ये तो बिल्कुल नई चीज आपने बताई है. I know, seriously. Well, the conversation has started on a very good note. Of course, I know we wanted to keep the scope within the 6 pillars within what you have, Monica. But interestingly, we've got 2 specialists here. One is from the behavioral science, the holistic science, and one is from the medical industry. Does the patient have a choice of deciding who should they approach first? How do I decide between Abhilasha and Dr. Ashok? If my family is, say, seeing those symptoms in me, how should they pick who should be the right person to approach first? I don't know. I mean, it's an open forum. Abhilasha, you can go ahead. I'm sure our Dr. Ashok, whoever wants to jump in. How do we decide who's the right person to talk to me? Anupam, you may decide either, but you would be lucky to land up with the right one. And when I say right, I'm not questioning the competency of a counseling psychologist or a psychiatrist. When you go to a counselor, when you go to a therapist, if the therapist is also able to identify that the scope of, the symptomology is going a bit beyond, this cannot be addressed just by talk therapy or just by psychotherapy, then any counselor, any psychologist will refer the patient or the family to see a psychiatrist in case you have come to me. And in case you've gone to a psychiatrist, let's say, and the psychiatrist, I'm speaking on behalf of Dr. Ashok, just please do correct me if I'm wrong. If the psychiatrist at that time feels that, yes, they're worried, they're anxious about the situation right now, but it may not require strong medication, and this can be dealt with differently, or along with medication, counseling will also help. That's a decision the psychiatrist will take, the general practitioner will take, or the psychiatrist will take. So either ways, you will end up, maybe not in the first meeting, but you will end up at the right place with the right people. अनुपम, मेरा इसमें एक बड़ी बेसिक सा, मैं तुम्हारी बात पे बोल रही हूँ कि टू नो दैट आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ये अपने में मुझे लगता है बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है कि आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता है. सॉरी इफ आई एम जनरलाइजिंग, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं यही सोच के कि यार ये तो उसको देख के बोल रहा है, इसको देख के बोल रहा है. मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, मैं बिल्कुल लेमैन की तरह पूछ रही हूँ. लेकिन एक जैसे मेरी लड़की बोलती थी, ओ एट दैट टाइम आई वाज इन डिप्रेशन मम्मी, अंडर डिप्रेशन. अभी मेरी भतीजी बोलती है कि अरे उसको डिप्रेशन है. मतलब ये वर्ड इतना इजीली ले लिया जाता है डिप्रेशन, जैसे कि ये बस सभी को होके रखा हुआ है, एंड इट्स नॉट इजी थिंग. इट्स नॉट इजी थिंग. मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वंदना आपके उस पे आ रहा था कि एज रिमाइंडिंग माय फोक्स, डॉक्टर वंदना इज the founder, one of the founders of the radio and TV, and she also runs a lot of beautiful shows related to, very very closely related to mental health. जो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, अनफॉर्चुनेट है बट है, सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस. हम सबको आइडेंटिफाई करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड ऑल दैट. और एक चीज हमारे आज जहन में थी कि क्या मेंटल हेल्थ क्लास देखती है
और अगर गरीब तबके से कोई लोग हैं, क्योंकि वंदना ऐसे ऐसे कम्युनिटीज में जाती हैं जहाँ पे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, बट है रियलिटी ऑफ लाइफ, तो उनको मेंटल हेल्थ अगर होती है तो उनको होती भी है कि नहीं होती है? I mean, this is the question. Is it a part of certain class of people or is it everywhere? अगर उनको जो खाने को तरस रहे हैं वो बेचारे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को कैसे देखेंगे? So this is also a second question I want to ask. रोटी की फिक्र है, उन्हें डिप्रेशन नहीं होती है। वो फकड़ होते हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। So it is only the middle class which is suffering from depression, anxiety. Yes, go ahead. Abhilasha, would you agree? I would say that I think the probability of mental disorders, not just depression, depression is one of them. The probability of disorders would be there in the poor also, mainly because of fetal nutrition. When the women are pregnant, they aren't getting the right nutrition. The proper health of the fetus is not there, and I'm sure it impacts the mental health also of the fetus. So I am assuming, I don't have data to support that, but I would assume that someone who's so poor and someone who's struggling with life may end up with other kind of disorders, not necessarily depression, but it could be any other mental disorders. Absolutely. No, I mean, again, sorry, doctor, I'm interrupting you. Go ahead. अनुपम, मैं डॉक्टर अशोक की बात से पूरे तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ छोटे छोटे गांव में, इलाकों में। अभी रिसेंटली मैं करना सुबर्णा गई थी 2 महीना पहले। इट्स स्मॉल विलेज इन वेस्ट बंगाल, बड़ा ही इंटीरियर सा है। ये सारे जो मुरमुरे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो आए हैं जहाँ से, वो पूरी की पूरी उनकी ट्राइब्स पूरी वहीं पे रहती है। लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पर क्या एंजॉय करते हैं लाइफ। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी विद लाइफ, सो एक्साइटेड। मतलब मैं गई, मुझे तो सॉरी डॉक्टर, वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिस्टर लगा के वो पत्थरों पे लेट के सोए होते हैं और गाने सुन रहे होते हैं। उनको डिप्रेशन, गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। उनके पास ट्रांजिस्टर नहीं था, तो वो अपना कुछ सॉन्ग या आपसी में कोई गेम खेल लेंगे। दे आर हैप्पी विद दैट। गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, एंड इट इज समथिंग यू कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन द फेस मेनी अ टाइम्स। Monica, I've come with very few patients who are poor. वही लोग डिप्रेशन शिकार होते हैं, वो औरतें शिकार के हस्बैंड शराब पी के उनको मारते हैं। Yeah, that's right. तो दोस्तों, of course, एक But tell me something. क्योंकि वो रैट रेस में ही नहीं लगे हुए। नहीं, पर जब जैसे there are people हम लो क्लास के बारे में ही बात करते हैं कि जब men resort to alcohol, तो क्या इसमें भी there is कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई क्योंकि वो शायद उतना कमा नहीं पा रहे, या ये सिर्फ एक एडिक्शन ही है जिसका कोई रीजन नहीं है? ये चीज हमें बहुत your body demands it. It's alcohol addiction. The day you don't drink it, your body demands it. You feel unwell. Yeah, but इसके पीछे कोई डिप्रेशन का, या नॉट डिप्रेशन, आल्सो एंजाइटी का, या कोई प्रॉब्लम मेंटल वो नहीं है कि जिसकी वजह से वो ड्रग्स या इन अल्कोहल की तरफ मुड़ जाते हैं? बहुत कम लोग। It has nothing to do with this money, और क्योंकि वो बहुत एक छोटे तबके के हैं, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, इसका कोई रीजन। कम लोग हैं जो कि किसी वजह से ड्रिंक करते हैं। जनरली वो शौकिया शुरू होते हैं और they get addicted to it. So I'll be the devil's advocate, and also would respectfully disagree to a few things, and allow me give me that permit me to be with the one. लेकिन हमारे देखिए डॉक्टर अशोक एंड अभिलाषा एंड ऑल रेस्ट ऑफ माय पैनलिस्ट्स कि गरीब तबके के लोग, हम उसको एजुकेशन ब्लेम करते हैं, उनके भी सपने होते हैं, नहीं पूरे हो पाते हैं, तो दे गेट इनटू डिफरेंट कोर्स। शराब इज वन ऑफ द रीजंस, एंड जो घर में होता है उनके, इट ग्रेजुअली बिकम्स टू अ पॉइंट, इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ आल्सो, एवरी डे काइंड ऑफ थिंग, राइट? कहना, मेरे ख्याल से कहना तो, जनरलाइज करना तो ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की प्रॉब्लम है ही नहीं, उनके पास वो नहीं। मेरे अगेन, वी ऑल हैव सीन दैट, वी ऑल नो दैट, भाग तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये ओवरऑल एवरेजली आई अंडरस्टैंड दैट रात को उनके पास सोचने के लिए, चलो ठीक है, वो अपना पत्थर पे सो गए,
but I would feel that yes, ये कहना मेरे लिए है ठीक है कि एक क्लास के बाद ही ये privileges open हैं कि वो counselors या फिर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स या फिर मेडिकल उसको देख सकते हैं इसके लिए क्योंकि दे कैन अफोर्ड थ्रू ईदर थ्रू इंश्योरेंस actually that's why Anupam that's why we are never able to get the data right on, and especially in India's case that so like for example like Dr. Ashok, a general practitioner, would not be aware because उनके पास वो गरीब आएगा ही नहीं, और वो गरीब क्यों नहीं आएगा? because of lack of education. उसको मालूम ही नहीं है कि ये भी चीज फिटेबल है, lack of and money. of course lack of money also. वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जाएगा, lack of money की वजह से वो अपना फ्रैक्चर जरूर करवाएगा। कोई भी गरीब, जितना भी गरीब हो, वो उसको जब टांग टूटेगी वो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, पैसे मांग के जाएगा कि नहीं जाएगा। सो जब उसके जहन पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और वो नहीं नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो सुबह उठता है, टांगे ठीक है पर चल नहीं पा रहा है, शायद उसको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, या वो तो वो फिर पैसे मांग के क्यों नहीं एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा पा रहा? बिकॉज उसको अवेयरनेस ही नहीं है. It is not because he's poor and he doesn't have problems. And coming to the second point, which is very pertinent, alcohol abuse, substance abuse, drug abuse is not always for recreation. It definitely starts in a lot of cases because of recreation, but it then also becomes an unhealthy, we call it unhealthy coping mechanism. Now what happens with substance abuse? आप reality से हट जाते हैं. कोई भी substance चाहे जिस भी level का हो, you kind of disconnect with reality. Now why would someone want to disconnect with reality? Because he doesn't have the mechanism to cope with his reality. क्या आपने ये सुना नहीं है? बहुत थके हुए आए हो आप, आज का दिन बहुत खराब था, मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा, एक ड्रिंक पीनी है. बॉस ने डांटा, क्या हुआ ऑफिस में, उसको अब मैं फेस नहीं करना चाहता, मुझे एक ड्रिंक चाहिए ताकि मैं इस बात से स्विच ऑफ कर सकूं. धीरे 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 ये एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी बन जाती है. तो स्टार्ट कहाँ हुई? स्ट्रेस था, उसे फेस नहीं किया, काउंटर नहीं किया. इमोशन थी, गुस्सा आ रहा था अपने बॉस पे, उसे रेगुलेट नहीं किया, एस्केप कर दिया विद अल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस. सो सेइंग दैट पुअर पीपल, एंड इन फैक्ट पुअर पीपल में सब्सटेंस अब्यूज सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनकी रियलिटी दिस इज द ओनली एस्केप दे हैव. वो रिक्शे वाला जितना कमाता है वो अपनी वाइफ को जाके नहीं देता, वो उड़ा देता है, एंड व्हाटएवर ही कैन बाय, बिकॉज़ ही डजंट वांट टू फेस द रियलिटी कि कल सुबह उठ के फिर से उसको वही रिक्शा चलाना है, वही मेहनत करनी है और जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है. सो बट दे डोंट हैव एक्सेस टू मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, पर्टिकुलरली इन इंडिया आल्सो. एंड यस, इट इज अ कॉस्टली अफेयर, इट इज substantially expensive and it's not covered under health insurance in our country. So that also becomes a major challenge for people to approach, and that is why we don't have the data. That is why we say ये सिर्फ अमीरों की problem है. अमीर also when we talk about poor people also, I fully agree. बच्चों के ऊपर बच्चे बहुत खुश होते हैं and all, but after a certain age, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है कि बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड की. कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा जबकि वो इस लेवल तक पहुंचे, तो दैट मींस कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो होगी उनको जो बाहर आई ही नहीं और वो इस लेवल तक और इस स्टेज तक पहुंच गए. Don't start it, but if you drink, limit it to two pegs a day. Good doctor, I like it. Abhilasha, आप बताएं. So yeah, absolutely. I think Dr. Ashok has found the middle line, and उनके जो last words हैं, that is the key. वो आपका मंत्र है कि first of all don't start, find some other way to deal with that stress. Or if you are taking 2 drinks, then उसको लिमिट में रखो. Basically it's about regulating. आप अपने इमोशन को उस हद तक रेगुलेटेड रखो कि आप ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे हो, 2 से ज्यादा की आपको जरूरत ना पड़े. That would start harming your health in a certain way. So अगर आप डिपेंड ना हो जाओ, for example, अगर आप you don't drink and you are not looking at alcohol at all as a coping mechanism, then you need to look at other tools to ensure that जो आपके साथ होता है ऑफिस में या जब आप सुबह उठ के ऑफिस जाते हो, you are better prepared to face the normal stresses of life. You are prepared to face कि ठीक है, अगर बस निकल गई तो दूसरी बस आ जाएगी, या कैब नहीं मिली तो दूसरी कैब मिल जाएगी. You are more patient, आप में सब्र है. And these kind of attributes, if you are able to build up with yourself, these are what we call the behavioral attributes. अगर आप वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और your interpersonal skills, that you are able to deal better with your boss. आपने देखा होगा ऑफिस में
एक जना है ऐसा जिसको कभी डांट ही नहीं पड़ती, वो आराम से आता है, सुबह आता है, काम करता है, चला जाता है। बट कई है जो छिड़ते हैं बहुत ज्यादा। सो इट्स अ बिहेवियरल कंसर्न। So you need to probably work on your behavior that you can learn to deal with difficult people, you can learn to live with difficult people, ताकि आप जब घर आओ वो चीज आप बैग अपने साथ नहीं कैरी कर रहे हो जिससे आपको एस्केप करने की जरूरत है। एंड यू लिव इन द टूल्स लाइक माइंडफुलनेस, कि आप अब घर पहुंच गए हो, नाउ यू आर एट होम, लिव इन द मोमेंट। अभी की क्या रियलिटी है, अभी की रियलिटी है, अच्छा बच्चे हैं, चलो उनको होमवर्क चाहिए, व्हाटएवर, आई मीन योर ओन रूटीन, आई एम नॉट सेइंग एज अ जॉब यू हैव टू चेक योर चाइल्ड्स होमवर्क। बी इन द मोमेंट कि अब आपका रोल क्या है, या आप टीवी देखो, कोई भी लेजर एक्टिविटी करो जो कि अनहेल्दी नहीं है या एडिक्टिव नहीं है। डू दैट, ईट योर फूड ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम। आजकल तो मतलब टाइम ही नहीं है। इफ यू कम बैक होम फ्रॉम ऑफिस, यू लिटरली हैव इनफ टाइम जस्ट टू फ्रेशन अप, प्रोबेबली डू एक्सरसाइज, 1 hour of exercise is excellent, खाना खाया, and you should be sleeping. Your sleep protocol is the main thing. If you sleep well, आप 8 घंटे की नींद अच्छे से ले लेते हैं, टाइम पे सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठते हैं अगेन इन फ्रेश एयर, यू गेट सनलाइट। When you go to office, आपका वो इतना स्ट्रेसफुल दिन नहीं जाएगा। You'll be able to deal with people. अभिलाषा, ये बात तो सही है, लेकिन it's so tough. Like जो आप बोल रहे हो, सारी चीजें एक्सेप्टेड है, सबको पता है। It is very tough. ये 8 घंटे की प्यास, अपना पूरा बर्डन बैगेज कहीं रख कर आके बैठो यहाँ पर। Yes, doctor. On that, a very pertinent point she brought up that it sounds so easy. सबको पता भी है, there's so much on internet these days about protocols to follow for good mental health and everything, but it's difficult to follow. It's difficult to pursue. So वंदना जी, वहीं पे रोल आता है एक प्रोफेशनल का, एक थेरेपिस्ट का। So like for example, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 50 क्रंचेस रोज करो और आप वेट लॉस हो जाएगा या टोनिंग हो जाएगी, आप कहोगे अभिलाषा कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो कौन करवाता है आपको 50 क्रंचेस? जिम ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, राइट? सो एक बेसिकली सपोर्ट, एक सहारा जो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है, जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहा है। सो इन काउंसलिंग देयर इज होमवर्क, there's progress monitored कि okay, what अगर आप कहेंगे मुश्किल है, सोना मुश्किल है, तो the therapist goes in deeper कि what is coming in your way, आप क्यों नहीं सो पा रहे, what are your challenges, let's work around those challenges. It's a lot of work. It is not just कि आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया या मैंने आज बोल दिया इस शो पे तो आप आज से implement कर लोगे. No, what I'm trying to say here is when we talk about mental health is that we need to take professional help. There are clinical psychologists out there, there are therapists out there whom you can talk to, whom you can have sessions with. But of course, the question comes of it is an expensive proposition. That's why a lot of people avoid it. But gym instructors are also not cheap. Dietitians and nutritionists are also not cheap. So basically, Vandana, yes, it is difficult, but it becomes easier when you have support of a professional. So try and seek support of a professional. Yeah. Yeah, very good. Actually, in the same manner, I was just thinking nowadays what happens is children, kids, young kids, instead of sleeping that 12 to 8 or say 10 to 6, they start saying, okay, we will study late and we'll sleep at say 2 o'clock or 3 o'clock and then get up late. So is that 8 hours sleep or that it's just equal or that it still has some long time issues and then can have a problem? Like Monica, yes. If keep on having in a regular from a perspective of general well-being, I would say that research definitely shows that nighttime sleep is the best time sleep, right? Circadian rhythm सबने सुना हुआ है. So sunrise से लेके आपकी body activate होती है और sunset, जैसे ही sunset होने लगता है, that is when your body starts releasing melatonin that induces sleep. So basically बच्चों में भी हो रहा है. 90% children now. No, so 90% of children, what they are doing is they're fighting their sleep. So that is what the first thing that is unhealthy. अब ये इसके and this was induced mainly in COVID because ना दिन ना रात कोई हिसाब किताब नहीं रहा, कुछ करने को नहीं रहा. So we are yet to notice what are going to be the repercussions. But अगर हम इसको equate करें, जो लोग shifts में काम करते आए हैं इतने सालों से, we've had people working in shifts. You know, there are doctors who work in shifts, there are pilots who work in shifts, जो रात को fly करते हैं, दिन में सोते हैं, अपनी catch up करते हैं sleep के साथ. Over a period of time, definitely health में deterioration पाई गई है. Physical health में definitely notice किया जाता है that is why they have to उनको अपने बाकी parameters इतने अच्छे रखने पड़ते हैं क्योंकि they know they're compromising somewhere because of their shifts. So आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो shift work कर रहे हैं, एक तरह से वो shift workers की तरह काम कर रहे हैं. वो रात को जाते हैं, चाहे वो रात को जाके पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, whatever, और वो दिन में सोते हैं या वो शायद दिन में भी नहीं सोते हैं. So they are working like doctors 36 घंटे बिना सोए बैठे हुए हैं. So it is definitely going to take its toll on
their mental health, because ये जो professions हैं, these people know how to handle it. They know कि हम कहीं अपनी body को बहुत ज़्यादा push कर रहे हैं तो हमें कहीं पे relaxation चाहिए, और उनको motivation भी है. बच्चों में नहीं है वो, बच्चों में बस घसीट रहे हैं अपने आप को. So इसका definitely आगे जाके आज नहीं पता चलेगा. Yes, the answers will come in a few years time, and that's when we'll be able to say कि ये जो generation थी जब ये ऐसे time आया. क्या trend है मुझको ये नहीं समझ में आता है कि excuse me कि मतलब हर बच्चा ये बोलने लगता है कि हमें डिप्रेशन हो गया है, हमको ये हो गया है, and something like that. I don't understand. जैसे अभी it's becoming very cool. And yeah, and so this brings us to the second thing. Is it age related, or उसके symptoms अलग होते हैं क्या, उसके coping mechanism अलग होते हैं? I'm sure it has nothing to do with age. छोटे से बच्चे को भी हो सकता है और हमारे seniors, aging parents को भी हो सकता है. तो but not generalizing. We've got one specialist and of course a good panel here to discuss. And again, कोई right कोई wrong नहीं. तो age को लेकर अभिलाषा आप क्या कहते हैं? आपके based on your how many people you see, is there any trends in going up, like in certain age class you see that do you see more of those and less of those, something like that? Anupam, I'd like to correct her, because mental illnesses and especially things like depression are completely out of my forte and completely out of my professionalism, and we don't touch that because it requires a lot of specialization. Yes, I can give you, a general view on जैसे जो वंदना ने कहा कि बच्चे आजकल ये word बहुत commonly use करने लग रहे हैं. So what I can give is not a research or a diagnosis. I can give a general statement or an observation or maybe even a judgment कि yes, loosely use हो रहा है ये word. Depression हो गया है मुझे और ये हो गया है. अब इसमें it's like a bomb hoax. प्लेन में कोई इंसान कह दे कि प्लेन में बॉम्ब है, the plane has to carry out its security procedures. स्कूल में फोन आ जाए कि स्कूल में आज बॉम्ब है, छुट्टी कर दी जाएगी, इवैक्यूएट किया जाएगा बच्चों को. You have to act on those things, right? Similarly, mental health में भी, even if you think it's a hoax, you can't take chances. So even if children are saying, मुझे तो डिप्रेशन हो गया, and yes, वरना like you say कि they make it sound so small, and होता भी है या नहीं होता है. We cannot say होता भी है या नहीं होता है until a diagnosis is done. So we cannot say a trend है. It could be a hoax, it could be true. So अगर कोई बच्चा कह रहा है, बार बार बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, चाहे हमें अंदर कहीं फीलिंग है कि ये कूल बनने के लिए कह रहा है या टेंशन कह रहा है या जस्ट लाइक दैट, या इसको शायद डिप्रेशन वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है या साइकोसिस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है, बट हमें वो बॉम्ब होक्स का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना होगा. We will have to ensure the methods, the diagnosis to be done. ले जाना चाहिए, मतलब like therapist. Definitely get them counseling, because start with counseling, because अगर एक बच्चा बार बार ये बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं उसे किसी चीज की अटेंशन की जरूरत डेफिनेटली है. Let's assume, let's hope कि आपके पास एक केस है, आपका ही अपना कोई loved one, और वो कह रहा है. So just as an example, hypothetically I'm saying, आपको फील हो रहा है as a parent or as a friend or whatever कि कुछ लग नहीं रहा, but why is this person saying again and again? That means somewhere that person is looking for some attention. और वो attention problem कल को magnify ना हो जाए, बड़ी ना बन जाए. Why not just go to a counselor, let the counselor handle attention क्यों चाहिए? And क्यों escape करना चाह रहा है? That means ability to deal नहीं है, तो counselor उसमें भी help कर देगा, psychologist उसमें भी help कर देगा. And अगर psychologist को लगेगा कि नहीं ये तो सच में है, and ये देखो कैसी friend है या कैसी mother है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे को solid depression हो चुका है. Like डॉक्टर अशोक ने भी कहा था, एक mental status examination होता है, उसे हम MSC कहते हैं, and उसमें we notice certain things कि ये चीजें अगर बच्चा कर रहा है या बच्चा या कोई भी पर्सन, तो there is a chance that इसको mental illness या disorder है. अगर काउंसलर को भी लगता है कि नहीं है, then जो प्रॉब्लम है जिस वजह से वो बोल रहा है वो रिजॉल्व की जा सकती है. शायद वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कि इसको एक्चुअली है क्या, उसको वर्ड ही डिप्रेशन मिला तो उसने डिप्रेशन बोल दिया, राइट? हो सकता है वर्ड ही कोई और. लैंग्वेज रियली इज अ बैरियर इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. सो इसमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना इसलिए जरूरी है कि ना भगवान ना करे कि कोई इलनेस निकले, बट एड्रेस द इशू.
That's right, Abhilasha. That is like you said, wormholes. So just in case 1%, if there is a possibility, if there is some problem, at least that can be addressed at the right time before it's too late. Yes. So maybe yes, it is not I would always might be just stress, or just stress for a limited time of period of time, say 1 week or so, or maybe 2 days, and the child is able to overcome it. But then there is always there ki just 0.99%, if there is something, he will always get the help at the right time. And with that cycle, I have इतना बड़ा टैबू हमने बना दिया है कि अगर बच्चा डिप्रेशन बोल रहा है और डॉक्टर के पास ले जाना, मतलब वी ट्रीट इट लाइक दैट ना। इंडिया में तो हम इसको बहुत नॉर्मल नजर से नहीं देखते हैं। मतलब थोड़ा सा वो बच्चा डिग्रेड हो जाता है या वो पेरेंट्स डिग्रेड हो जाते हैं आफ्टर सेइंग दैट दे, दिस इज फैक्ट आई एम टेलिंग यू अभिलाषा, ये होता है। ये होता है। This is the stigma that we need to fight. It's very unfortunate. It's वजह से कई मदर अपने बच्चों को ले भी नहीं जाते। जैसे मेरे अपने फैमिली में जो इश्यू है, मैं चाहती हूँ कि वो सामने जाए, पर वो जाने ही नहीं है। नहीं दीदी, होना ही नहीं है, फिर तो इसका बहाना बन जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा। This is a stigma we need to fight, or we need to address, and this is the reason why we are having such kind of thing, and all over the world these things are happening, because at the end what they are trying to, everyone is trying to say that this stigma, this हमें पेट में दर्द होता है, 4 दिन होता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कोई बोलता है नहीं है कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ वीक, वी मेक इट अ पॉइंट दैट वी गो टू अ डॉक्टर। इफ वी हैव अ हाई फीवर, वी गो टू अ डॉक्टर। इफ देयर इज अ शोल्डर एक 2-3 दिन चल रहा है, चलो फटाफट दिखा कर आते हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इट इज, राइट। The similar thing when it comes to anything, even if it's not there, तो हम उसको थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम क्यों डॉक्टर के पास। हमने वो उनको सेग्रीगेट करके कहीं रखा हुआ है कि अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इट इज अ टैबू, इट इज नॉट राइट। बट अगर हम अपने स्टमक के, शोल्डर, हाथ में पेन, पैर में दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इट इज परफेक्टली फाइन, नोबडी विल आस्क अबाउट इट। पर चलो, एक बहुत अच्छी बात है ये, आई थिंक हमारे सारे लिसनर्स को भी पता चलना चाहिए कि अगर एक बार छोटा सा भी बच्चा कुछ बोलता है या नहीं भी बोलता है, तो वी शुड नॉट अवॉइड इट, वी शुड डेफिनेटली टॉक टू द लाइक कंसर्न पर्सन, थेरेपिस्ट या कोई भी है। मतलब हम लोग जो अवॉइड कर जाते हैं वो आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में बदल जाता है। तो अभिलाषा, एक और चीज, ये कोई एक सर्टन एज होता है जब कहते हैं कि इफ यू विल क्रॉस दैट एज, लाइफ विल बी कंफर्टेबल। इट्स लाइक समथिंग 13 to 16 टाइप। No, 13 to 16, 13 to 18 is the most difficult, in fact. That is the most difficult. हम वो उस एज को इसलिए ध्यान में नहीं रखते क्योंकि मस्ती में निकल जाती है, बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं बच्चे उस टाइम, और there's so many things happening. But अगर देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट इमोशनली जो डिफिकल्ट फेज होता है वो टीन ईयर्स होते हैं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है उस टाइम, इतनी डेवलपमेंट, इतना हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं बच्चों में, और सोसाइटल प्रेशर भी अलग ही होता है, एकेडमिक्स का अलग होता है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में क्या होना है। सो दे आर मोस्ट प्रोन टू डिग्रेडिंग मेंटल हेल्थ इफ दे आर नॉट सपोर्टेड वेल, इफ द एनवायरनमेंट like we say, the nurture in the environment that they're in is not healthy. So that is the most difficult time अगर देखा जाए। उसके बाद एक बार इंसान थोड़ा सा जैसे कह लो लाइन पकड़ लेता है, तो इट्स easier for that person to cope with life. जिसको कहते हैं कि अपने आप पे थोड़ी एश्योरिटी आ जाती है, अपने आप पे थोड़ा भरोसा आ जाता है with age. But that is the most difficult time. My experience is, yes, Monica? Yeah. I was just going through various researches that happened, and in this उसमें भी it was written that 50% of the mental health issues that happen at the age of 14, and around 75% happen at the age of say 24 years. So this has something related to age maybe, or even after sometimes we have seen that after retirement, all of a sudden, especially men, they feel that there is
nothing else to do, and they all of a sudden they become more stress, anxiety, ये सारी चीजें उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है. Even high blood pressure and all these things become a little more as when they get retired. It's not the same with the women because they carry on with the same routine. But with men, what do you think? What are the things that a takeaway from it? Where we had almost a 45 minutes long discussion. So, what are certain things that you want our listeners to know that they should keep those things in mind while thinking that whether the person is actually having some problem or it is something which the person can cope up on her own, or you need to take her or him to the psychologist or therapist. See, Monica, what I say is what I always advise to a lot of people, and like मेरे पास मेरे friends आते हैं कि I have a relative, that person needs counseling, can you please counsel that person, वो depression में है, वो ऐसे है, वो वैसे है. I just say that 2 words I say, be there. Just be there for that person. You tell them, you suggest to them. लोगों को idea ही नहीं होता कि अच्छा therapist के पास भी जाया जा सकता है, वो भी scene है. Make them aware that there is, you can take them along. You know somebody, you know someone professionally, or you will find someone professionally whenever they're ready. But उनको push करके आप नहीं decide कर सकते कि वो सच में उनको problem है नहीं है, क्या वो खुद cope up कर सकते हैं नहीं कर सकते. And अगर उस बहुत serious problem है तब भी आप push करके नहीं ले जा सकते. Right? So you can be there. वो जब भी आपसे बात करना चाहें, सिर्फ time spend करना चाहें, just be there. ये condition मत लगाओ कि तुम बीमार हो, जब तक तुम डॉक्टर को नहीं देखोगे मैं तुमसे बात नहीं. ये कंडीशन मत लगाओ कि मेरे सामने रोने धोने की बातें मत करना, मैंने तुम्हें बोला है डॉक्टर के पास जाना. Just be there, hear that person out. Maybe it's a we end up saying many a times. We end up saying this kind of things many a times without even knowing that one has to be non-judgmental actually. मुझे लगता है और patient hearing is very much important to understand. Patient hearing is very, don't give suggestions, just be there. And when जब वो थक हार के इंसान ultimately यही बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, that is the time you can say, would you like to see a therapist? Would you like to see someone? So आप क्या कर रहे हैं? You're being there. आप force नहीं कर रहे हैं, आप उनको कोई guidance नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें नहीं बता रहे कि अच्छा ऐसा करो, रात शाम को ना आधा घंटा walk करो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा. You're not doing that. There is a way to address that also, कि the person should go for a walk. So I would sum it up in 2 words, just be there for those people, for them. And of course, if it is something for yourself, then same, be there for yourself. Identify that you are there for yourself and you want to go and talk to a professional. You want to go and talk about it to someone elderly, some professor, some elder person in the family who can guide you. But talk about it. पहले joint family में ये सारी problems होती थी. It was always a nuclear family problems. It started from there. The loneliness has actually aggravated it. Correct. मुझे लगता है अभिलाषा कि आज आपने काफी बड़ी बेसिक सी चीजें बताई हैं लोगों को, जो अगर फॉलो कर लिया जाए तो ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम अपने आप ही सॉल्यूशन पा जाएंगे. I think last part is the best part, and always we end with the golden words. I think gender, class, age, nature of job, past, present, future, सब शब्द का एक ही शब्द है, loneliness. I think mental health वहीं से शुरू होता है जब you have no one to vent it out on your own way. And हर आदमी का अलग तरीका होता है. इंसान का, आदमी तो गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, मुझे पता है. It may also end up in a different controversy today. Yeah, we live in a different world today. You know what? I live in a world where I have to be so careful when I pick words because my kids do not spare me. There's no mercy for today being labeled as a sexist, where your intentions are different. I've been brought up in the same world as you guys, in the same kind of background where we used words so loosely at times. And anyways, but great conversation. Monica, back to you. If you want, again, I am all yours in terms of it's such a heartfelt topic. इसमें हंसी, इसमें अगर हम लोग हंस मिले, I think this is where we want to make it so deep. Light. Yeah, we can make it so and light it's deep for others. Inside. With all that discussion that has happened, and actually what Abhilasha said and you said, it's exactly right. What we feel is one of the best things is that we need to be there to listen to the person.
Many a times होता क्या है कि कोई हमें कुछ बताना भी चाहता है, we end up trying to shut him off कि अरे what are you thinking, it's not that. We should be there to be non-judgmental and be there. He should have that trust कि अगर मैं जो भी बोलूं, the person is there to listen to me. If I have a problem, the person will be there to listen to me. And I think that is what even our listeners should know about it. कि कोई भी अपना अगर हाथ दे देता है कि if the person give you a hand कि हाँ इसको पकड़ के इसको मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो जो साथ है वो बहुत ज़्यादा important है for every person who's dealing, क्योंकि इस टाइम पे वो शायद कभी अगर किसी को भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, उसको लगता है कि आई एम ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, nobody is there to listen to me, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं, मैं इसको बताऊंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा मेरे लिए, उसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा. That time if you give that hand to that person and tell them and make him trust you, that is the best thing that can happen with such kind of person. And if I may interject, thanks. It's good. Actually, the good conversation starts when the show is about to end. Yeah. और मेरे दिमाग में एक आया कि किताब मैंने पढ़ी थी, and I still have that book. I can share with lots. And उसका टाइटल ये था कि I am alone, but I am not lonely. It's my choice to be alone. You can be alone. And हर ऊपर वाला हर इंसान को एक ऐसी खूबी से बख्शता है उसको, कहता है उसको देता है ऐसी चीज जो कि he can keep himself or herself entertained with that hobby. कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग art painting करते हैं, and whatever can keep you alone for 2-3 hours, उसको meditate. That's also a type of a meditation which you do not need anyone. You're not lonely. You're still happy. You are alone, but you're not lonely. And I think that is one of the also मेरे दिमाग में जहन में आता है कि जब हम कैसे कोप करते हैं, तो मेरा अपना स्टाइल अलग होगा, which में अभिलाषा में से you know what अनुपम, no, it doesn't apply to me. मेरे अलग तरीका. कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, they run to their partners. Some people find the corner in a room and take a book and read quietly, right? And again, ये bringing पे होता है कैसे आपको आपके पेरेंट्स ने किस चीज से कैसे आपको स्ट्रेंथ जो दी है वो किस उसमें दी है. आई थिंक ऑल दिस अप्लाई. देयर इज, आई थिंक एक किताब में समेटा नहीं जा सकता मेंटल हेल्थ को, एक कोर्स में नहीं समेटा जा सकता, एक डिस्कशन नहीं करा जा सकता, एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. Of course, we do get to know the new techniques, the most applied techniques when we have people like Abhilasha. So my heartfelt thanks. Really, we are honored to have people like you, Abhilasha, and we would certainly like to see my pleasure. It was my pleasure. Come back. Monica, back to you if you are on, and going just around the panel if you have to add a few things, and then of course we can sum up our first episode of this great show. Monica, jo aapka, this is the brainchild, your brainchild to start such a show on our platform. So back to you. Thank you so much, Abhilasha, Vanda, and Anupam. It is so nice to have this discussion at least started. I was just talking to Abhilasha and I was talking to Anupam also yesterday. And the only thing what I was talking about, when we listen from a therapist, we all know something or the other somewhere. ये चीजें हैं जो शायद हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें से, not all of us, but कुछ चीजें हम कहीं ना कहीं जानते हैं, but हम समझ नहीं पाते जब तक हम उसको एक थेरेपिस्ट से, एक प्रैक्टिशनर से और एक एक्सपर्ट से हम वो सुनते हैं. और द मोमेंट वी स्टार्ट द पर्सन दैट एक्सपर्ट स्टार्ट टेलिंग अस समथिंग एंड वी रियलाइज कि हाँ ये सही है और हम उस पर विश्वास करने लगते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस, एंड आई थिंक दिस विल, if this kind of discussion will help, say if there are 1,500 or 1,000 listeners are listening to us, if this kind of discussion just help 1 or 2 people in those thousands, our aim is somewhat got the due. And this is all that we want from this discussion. Thank you so much. Anupam, I would request if you can just sum it up. And Vandana, if before you want to add something. We go, I would like to hear some words of wisdom from Vandana as well before we kind of call it a day. नहीं, मैंने काफी कुछ सुन लिया और बोल भी दिया. अभिलाषा, बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो आपने बताई हैं, जो करने से बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस आते हैं. That's what I said before also. So let's continue with Abhilasha. Actually, there are lots more to know. And I'll request you if you have time, so we can make like a series of programs
on this, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, बहुत सारी बातें रह गई. एक छोटा सा कोई टॉपिक लाते हैं तो पूरा 1 घंटा निकल गया. It's just a start. Just a start, actually. Yes, Monica came with actually a lot of questions, and I'm having few things in my mind which I thought I will ask this time. But actually, when I saw the questions, also, when I saw the topics, कि ये topics हम आज cover करना चाहें, I was like, this is vast. And I kept telling Monica, I said, Monica, mental health is vast. In fact, मेरा area ही इतना छोटा है, वो ही vast है, So true. It's but it's very interesting, and I think it's a pleasure to have you. पहले होता था कि ये वेलनेस हम लोग बहुत नीचे रखते थे और बाकी चीजों की प्रायोरिटाइज करते थे. अब टाइम बदल गया है, चीजें बदल गई, थॉट प्रोसेस बदल गए हैं. तो मुझे जाते जाते एक मैं और शेयर करता हूँ आप लोगों से. किसी ने मुझसे कहा था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट अ चेंज आई कैन ब्रिंग, आई एम वेरी स्मॉल इन द होल थिंग, राइट. तो मुझे जो उस वक्त गाइड थे, उन्होंने कहा था कि एक अंधेरे स्टेडियम में एक दिया जला दो छोटा सा, वो दिखाई देगा. So nothing is as small, right? And that was such a good way to explain to someone that every step towards where you want to be makes a difference. So of course, We4U Radio and TV has been started with this mission of bringing a small change in a small way, large enough for people who are really can associate. I think who cannot, उनके लिए तो छोटा ही है, but those who can, उनके लिए बहुत बड़ा है. I think ये strike होते हैं. It will strike home for those who are struggling, who really want to be close to those people, who are thinking about them, talking about them. And again, kudos to all three of you. My heartfelt thanks to Dr. Ashok who came on board today. But with that said, thank you folks for listening to We4U Radio, another episode of on mental health. This is Anu signing off from the show, and see you again. Thank you. Okay, bye. Thanks, Abhilash. Bye. Thank you.